and welcome to South Asia Today, a show that provides you the glimpses of South Asia. I'm your host, Shivangi Mishra. Let's begin with the headlines first. India's Bishnoi community sets an example in black buck conservation. Inside the Bottle art exhibition in Nepal leaves visitors in awe. And students in POGB rally against government in Build Tunnel Save Lives campaign. Let's begin the show. In the rugged landscape of India's northwestern region, the Bishnoi community has long protected the endangered black bucks, symbolizing the harmony between man and nature. The centuries-old tradition of stewardship continues today, showcasing the power of compassion and respect between humans and animals. Let's journey into their world and witness this extraordinary bond in action. These are Bishnoi community members from Rajasthan, revered as guardians of the endangered black buck. The community spread in Rajasthan and sub-adjoining states of Punjab, Madhya Pradesh, Haryana and Gujarat. Guided by their spiritual principles, they have safeguarded these majestic animals and trees for centuries, embodying a deep connection with nature. प्राणी मात्र है ना, उनकी रक्षा के लिए हमारा चाहे शरीर बलिदान हो जाए पर हम उनको न तो हरे वृक्ष काटने देंगे न कोई जीव जंतु मारने देंगे। हमारे यहाँ खेजड़ी पास में 15-16 किलोमीटर खेजड़ी का इतिहास है। वहाँ 363 लोग खेजड़ी काटने के बारे में शहीद हो गए। आज का इतिहास है। वहाँ माँ अमृता देवी का स्टेच्यू लगा हुआ है, वहाँ आप जाके देख लेना। और भी 363 लोगों का नाम लिखा हुआ है। काले हिरण है, चिंकारा हिरण है, कैसे भी बटेर वगैरह कोई भी है तो उनको हम मारने नहीं देते। The population of black bucks in India is estimated to be around 20,000 to 25,000, with a significant number found in Rajasthan. In the Kakani village of Jodhpur, the Bishnoi community has constructed a large memorial to honor black bucks killed due to poaching. The Forest Department, in collaboration with the local community, also runs an animal rescue center in the village to provide care for black bucks and other wildlife. Our journey led us to Abohar in Punjab, where the Sri Guru Jambeshwar Wildlife Sanctuary provides a serene refuge for black bucks. Amidst golden fields and whispering winds, these graceful creatures thrive under the vigilant care of the Bishnoi community, steadfast protectors against poaching. बीस और 9 जिससे टोटल 29 है, इसी से बिश्नोई समाज का नाम पड़ा है। और मोस्टली ये है कि पर्यावरण को कैसे ही बचाया जाए और ड्रग से और नशे से बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे दूर रखा जाए, मोस्टली इसी टाइप के हैं सब नियम। बिश्नोई समाज हर तरह किसी भी कोई जानवर हो उसको किसी तरह से कोई हर्ट करे तो उनको बर्दाश्त नहीं करते। स्पेशली जैसे ब्लैक बक के लिए काफ़ी इन्होंने मेहनत की है, काफ़ी लोगों ने बलिदान दिया है और अपने खेतों में, अपने घरों में भी इनको पाल के रखा है। जैसा जो दूसरा कोई नुकसान ना कर सके वो हर कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं। We had the privilege of meeting Ramesh Bishnoi, the National Vice President of the All India Bishnoi Association, a dedicated crusader for the protection of black bucks. Driven by an unwavering passion for conservation, he runs a rescue center in Dutravali village at his own expense, providing a safe haven for these endangered animals and ensuring their survival against all odds. हिरण घायल है तो उसको जो है जहाँ भी हमारे जैसे यहाँ सुखचैन जो ये फालका जिला अबोहर तहसील के अंदर बनी हुई है, सीतों के अंदर जो हमारी गौशाला बनी हुई है, यहाँ ले आते हैं। यहाँ लोगों के सहयोग से और जो गौशाला कमेटी है, प्रधान जी, इनके सहयोग से डॉक्टर को बुला लेते हैं और वो इसका इलाज करता है। अगर कोई हिरण को मारता तो हम ये सोचते हैं, ऐसे हमारी भावना बन जाती है कि हमारे बच्चे को मार रहे हैं, क्योंकि हमारा इन हिरणों से अटूट रिश्ता है।
The Forest Department applauds the Bishnoi community's unwavering commitment to safeguarding black bucks and other wildlife, recognizing their tireless efforts as true stewards of nature. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਬੋਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। The Bishnoi community's deep-rooted commitment to protecting black bucks and other wildlife continues to inspire global conservation efforts. Their unwavering dedication, guided by compassion and respect for nature, plays a vital role in preserving these majestic creatures for future generations. Kathmandu's Nepal Academy of Fine Arts hosts a mesmerizing exhibition of 45 miniature artworks inside glass bottles. Intricate replicas of Nepalese landmarks like Pashupatinath Temple and Singh Darbar leave visitors in awe. This one-week event celebrates artistic mastery and precision, captivating audiences with its blend of culture and creativity. Don't miss this unique showcase of Nepal's iconic heritage. A fascinating new exhibition in Kathmandu is leaving visitors awestruck as they marvel at miniature artworks inside glass bottles. Hosted by the Nepal Academy of Fine Arts, the one-week exhibition features 45 exhibits showcasing miniatures of famous Nepalese landmarks. Among the works displayed are replicas of Pashupatinath Temple, the Narayan Hiti Royal Palace, Singha Darbar, and other iconic sites, all intricately designed and contained within the narrow neck of glass bottles. The art collection has captured the attention of many, with visitors expressing astonishment at how such detailed miniatures could fit inside a bottle. Mostly त्यो नेपालको अलिकति फेमस अथवा प्रायोरिटाइज्ड प्लेसेसहरू अनि त्यसपछि टेम्पल्सहरू त्यस्तो मेन बिल्डिङ्सहरू काठमाडौँ एरियाको त्यस्तोहरू चाहिँ देखेँ अनि सबै राम्रो छ। लाइक त्यो फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति रिजम्ब्लेन्स गर्ने भएर चाहिँ यो चाहिँ यो ठाउँ हो भनेर चाहिँ अलिकति गेस गर्न सकिने, कुनै अब कम्प्लिटली चाहिँ याद नभए पनि गेस गर्न सकिने खालको त्यस्तो खालको थियो अनि राम्रै थियो। अलिकति कम्प्लिकेटेड आर्टहरू टाइपको त्यस्तो सिसाभित्र बनाउन भएकोमा चाहिँ एकदमै खतरा जस्तो लाग्यो। The exhibition has become a topic of intrigue for those who wonder how the artist managed to create such fine details within the limited space of the bottles. The miniature आर्टहरू गरेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै अचम्म लाग्यो। यो निकै नै गाह्रो गरी नै जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि सिसाभित्र सानो सानो कलाहरू देख्दाखेरि चाहिँ निकै नै अचम्म लाग्यो र यो एउटा नयाँ र फरक शैलीको कला चाहिँ मैले आज यहाँ आएर देखेँ। Bibhushan Nabeen Tamrakar, the mastermind behind these exquisite creations, has spent years honing his craft. Using discarded materials such as cardboard boxes, old books, newspapers, and glass bottles, he transforms everyday items into remarkable works of art. The raw materials are sourced locally and in many cases they are procured from scrap dealers. The artist's use of these materials highlights the potential for reusing everyday objects, transforming them into intricate works of art. While the exhibition has received widespread attention for its artistic innovation, it also carries an underlying message about sustainability and the creative potential of repurposing discarded items. As the exhibition draws to a close, visitors continue to express their amazement, reflecting on both the skill involved and the environmental message behind the art.
The Inside the Bottle art exhibition in Kathmandu not only mesmerized visitors with its intricate craftsmanship and attention to detail, but also left a lasting impression by highlighting the boundless potential of creativity and sustainability through the reuse of everyday materials. Now we take a look at some happenings in Asia in a segment called Asia Watch. Karachi police this week used tear gas and batons to disperse sit-ins by activists from a Shiite religious political party, protesting in response to sectarian clashes in northern Pakistan that have resulted in hundreds of fatalities. Kurram, a tribal district of around 600,000 near the border with Afghanistan, where federal and provincial authorities have traditionally exerted limited control, has been a flashpoint for sectarian tensions for decades. Fresh clashes between Sunni and Shiite Muslims erupted last month, triggering a humanitarian crisis with reports of starvation, lack of medicine and oxygen shortages following the blocking of the main highway connecting Kurram's main city of Parachinar to the provincial capital Peshawar. Local media reported over 100 children have died due to a shortage of medicines in the city. The provincial government and ED Foundation have started sending medicines to the region via helicopters. Demanding restoration of peace in Kurram, the sit-in protests at several key arteries in Karachi, organized by the Majlis Wahadat-e Muslimin, continued disrupting traffic since they started last week. About a dozen nuns performed hand chops and high kicks, some of them wielding swords, as they showed off their martial arts skills to hundreds of cheering well-wishers at the long-awaited reopening of their nunnery in Nepal. The nuns of the hilltop Druk Amitabha Monastery put on the show of strength to mark the institution's reopening 5 years after the COVID-19 pandemic forced it to close its doors to the public. The group of Kung Fu nuns aged from 17 to 30 are members of the 1,000-year-old Drukpa lineage, which gives nuns equal status as monks and is the only female order in the patriarchal Buddhist monastic system. Usually, nuns are expected to cook and clean and are not allowed to practice any form of martial art. But His Holiness Gyalwang Drukpa, a monk who ranks only slightly below the Dalai Lama in the Tibetan Buddhist hierarchy, decided to train women in Kung Fu to improve their health and spiritual well-being. He opened the nunnery in 2009 and it now has 300 members, aged between 6 and 54. The nuns come from Bhutan, India and Nepal and are all trained in Kung Fu, the Chinese martial art for self-defense and strength. Karawang Station, a key stop on Indonesia's landmark Jakarta-Bandung high-speed railway, was officially inaugurated last week. At the inauguration ceremony, Agus Harimurti Yudhoyono, Indonesia's coordinating minister for infrastructure and regional development, described Karawang region as a leading rice production hub and a major center for industrial parks, highlighting the station's role in reducing travel times and boosting economic opportunities. The Jakarta-Bandung high-speed railway, affectionately called WUSH for its remarkable speed, was put into official commercial operation in mid-October last year. As Southeast Asia's first high-speed rail, it represents a transformative leap in Indonesia's transportation infrastructure, inspiring profound changes in the towns and cities along the line. In a powerful movement for change, the Gilgit-Baltistan Students' Union launches the Build Tunnels, Save Lives campaign to address the dire state of roads in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan.
This alarming situation highlights the shocking neglect from local authorities as tourism suffers and daily risks for residents mount. In response, students are marching from Gilgit to Skardu, demanding immediate attention to the region's crumbling infrastructure and urging authorities to prioritize the safety of their community. A report. The Gilgit-Baltistan Students' Union launches a protest campaign titled Build Tunnels, Save Lives, advocating for the construction of tunnels along the Jaglot-Skardu road. This initiative aims to ensure safer travel and address the frequent accidents caused by the road's faulty design. Students from Karakoram International University are joining this vital movement, highlighting the urgent need for infrastructure improvements to protect travelers in the region. कदू रोड इस वक्त बिल्कुल जो है वो मौत का कुआं बन चुके हैं। यहाँ अभी एक अंदाज़े के मुताबिक अभी तक जब से ये रोड बनी 1200 के करीब लोग जो है ना यहाँ मलबे में या किसी हादसा के शिकार हो गए हैं। तो पूरा बल्तिस्तान कौम के अंदर इस रोड की गैर मेयारी तामीर पे तशरीफ़ पाई जाती है। इस सिलसिले में अभी कायो के हमारे जो BSF के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अलंग मार्च शुरू की है, तो हम उनको खैर मकदम करते हैं और उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। Students from the Gilgit unit organize a march from Gilgit to Skardu to draw attention to the pressing issue of road safety. They emphasize the necessity for safe infrastructure and pressure the government to act. The original design for the Jaglot-Skardu road included plans for 8 tunnels intended to bypass areas prone to landslides and avalanches, but these were inexplicably removed from the final plans. जो हमारे BSF के कराक्रम यूनिवर्सिटी के जवान जो आज 4-5 दिनों से गिलगित स्कर्दू रोड पे पैदल मार्च कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि इस रोड को महफूज बनाया जाए। और जनरल अफजल साहब ने जो अमायदीन शहर के साथ वादा किया था 8 से ज़्यादा टनल बनाने का जो ऐलान किया था, तो उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तो हम इन लड़कों के इन इक़दामात को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हम उनके शाना बशाना है। इंशाअल्लाह जुमरात के दिन हम भरपूर तरीके से इनका यहाँ स्कर्दू में इस्तकबाल करेंगे। आज वो डम्बुदास पहुँचेंगे। मैंने डम्बुदास में अंजुमन ताजरान को बताया हुआ है, वो शानदार तरीके से वहाँ उनका इस्तकबाल करेंगे। सिर्फ ये टनल का मामला नहीं है, ये जो अभी शगारथा वाला रोड है इसको एक माफिया बार बार इसको काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस माफिया की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमें इस साल इस शगारथंग रोड पे काम शुरू होना चाहिए। बस जरूरत दीगर हम बल्तिस्तान भर के आवाम जो है ना सड़कों पे होंगे। Frustration mounts among the people of POGB as officials delay the construction of tunnels and mafias obstruct road progress. The government's inaction has pushed residents to the brink. They have issued a clear warning. If construction doesn't begin soon, they will take to the streets in protest, demanding immediate action for better infrastructure and safer travel. अव्वल तो ये कोशिश हमारे सियासतदानों को करना चाहिए था। इन मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश हमारे सियासी और मजहबी पार्टियों को करना चाहिए था, हमारे इन सियासी और मजहबी लीडरों को करना चाहिए था, लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई। हमारे असम्बली के अंदर इसके लिए हर मेंबर को आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन हमारे मेंबरान को भी ये तौफीक नहीं हुई। ये असम्बली में जाकर अवामी नहीं होते हैं, ये किसी और के हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे तलबा जो है वहाँ से पैदल निकले हैं इस शदीद सर्दी में की हालत में। और मैंने सुना है इनमें से 1-2 लड़के जो बुखार की हालत में है, 1-2 के पाँव को छाले पड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत करके हौसला करके वहाँ से जो निकले हैं। हमारे आवाम को जो है चाहिए जिस दिन वो यहाँ पहुँचेंगे हम यहाँ पर उनका एक शानदार इस्तकबाल करें, एक पुरवकार इस्तकबाल करें और यहाँ से हुकूमत को एक बाकायदा एक पैगाम एक मैसेज दे दे कि जब तक ये टनल्स का मसला हल नहीं होता है, हमारे सड़कों को महफूज नहीं बनाते हैं, आप ये ना समझें कि ये स्टूडेंट ने यहाँ से एक एहतिजाजी मोमेंट पैदा किया उसके बाद हम खामोश बैठेंगे। The people of POGB celebrate the student-led march
with enthusiasm. They commend the students' dedication and plan to greet them with open arms, pledging their unwavering support for the cause. The Baltistan Students' Union invites everyone, not just students, to join their cause, creating a united front to demand the necessary changes from policymakers. In the heart of a remote village in the Udhampur district of Jammu and Kashmir, a group of determined women is turning the tide on plastic waste. With a vibrant training center, they are learning to craft beautiful jute bags, empowering themselves and their community while paving the way for a greener, more sustainable future. Through their efforts, they are not only creating livelihoods but also inspiring others to join the fight against plastic pollution. We have a report. In the scenic abode of Jammu and Kashmir, the remote village of Chakhar, located about 23 kilometers from Udhampur, has embarked on a remarkable journey toward women empowerment and environmental sustainability. Led by the inspiring Ranu Devi, a group of rural women belonging to self-help group have initiated a jute bag making training program in their village. With determination, Ranu successfully collaborated with the State Bank of India's Rural Self-Employment Training Institutes to establish a training center right in their community. पहले मैंने सोचा कि हम तो बहुत लेडीज़ घर पे ऐसे रोज़गार मिलता ही नहीं है, कभी इधर कोई आया ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों हम जो लेडीज़ हैं घर पे ऐसे बैठी होती हैं पूरे दिन बेचारी फ्री, चलो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि कोई नहीं तो कोई किसी को बुलाएं कि हम कुछ खोल लें, कुछ अपना बारे में भी सोचें. This initiative was born out of the need to provide employment opportunities for the women and reduce the excessive use of plastic in the community. The focus is on jute product entrepreneurship, where they craft various items from jute, including tiffin bags, laptop bags, and file folders. Women who once sat idle at home now have a sense of purpose and direction. With the opening of the center, they have the chance to learn new skills and explore potential learning opportunities in the future. सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये इधर सेंटर खुलवाया, और हमारे सेंटर का नाम है SBI RCT. इसकी पूरी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो इधर जूट प्रोडक्ट का इन्होंने मतलब कि हमारा ये कोर्स है, इसका नाम है मतलब कि सेंटर का जो कर रहे हैं हम जूट प्रोडक्ट उद्यमी, मतलब कि जूट से बनाने वाले मटेरियल. जैसे हमें मैम ने बताया कि जूट बैग बनाने हैं, मतलब टिफ़िन बैग हो गया, जैसे ये हो गया मतलब कि फाइल मतलब कि जैसे उसमें हम लैपटॉप डाल सकते हैं, फाइल फोल्डर. सर पहले तो मतलब कि सारी लेडीज़ घर में बैठी रहती थी, अभी ये है कि इधर सेंटर खुलवाया तो मतलब कि हाथ भी थोड़ा चल रहा है सबका, मतलब अच्छे से बनाया सब ने. हम तो यही चाहते हैं कि अभी ये सेंटर मतलब चलता रहे फ़िलहाल, तो हमारा काम मतलब कि जैसे मतलब कुछ लेडीज़ को आ जाता है बनाना अच्छे से, तो हमें मतलब कि रोज़गार यही चाहिए कि हमारा काम अच्छे से चलता रहना चाहिए. The center has bridged the gap between the remote village and opportunities for growth. It serves as a catalyst for development, empowering the community to thrive. The training center is led by a dedicated female trainer who guides the women throughout the process. Currently, the program is thriving with over 35 enthusiastic participants, including many eager young girls. इनके साथ जुड़े हुए लगभग 1 साल हो चुका है और हमने ऐसे कई सारी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराई हैं, जिससे जैसे कि ये बहुत रिमोट एरिया था, मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स करवाई उससे ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा रिमोट था. तो हमारा यही फोकस रहता है कि हम मोस्टली जो भी SC ST या
मतलब या तो जनरल कैटेगरी या कोई भी महिला हो, तो हम उनको कवर करें और उन्हें उनके माइंड में एक सेटअप बना सके कि ताकि वो अपने घरों में ही छोटा छोटा रोज़गार खोल सके और अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी इम्प्रूव कर सके। The trainees shared their excitement about gaining a new skill that can boost their household income. They are eager to finish the course and begin producing jute bags to replace plastic ones in their community. This initiative is transforming lives while protecting the environment as these women embrace their newfound skills to combat plastic waste. Together, they are weaving a brighter and more sustainable future for their community, one jute bag at a time. Now it's time for me to wrap up today's episode. We'll be back next week at the same time. This is Shivangi Mishra signing off on behalf of the entire production team of South Asia Today. Goodbye and take care.